Assalamu alaikum. I am Dr. Samra, resident ophthalmology. I will be discussing on how to read and report real field printout. एरो की से इस्तेमाल करना दोबारा स्टार्ट करना कैरी ऑन ठीक है स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन रियल फील्ड ये दबा क्यों रहे हो Real field refers to an area visible to an individual when they fixate their eye in one case or direction. It is also known by a metaphor as an island of vision surrounded by a sea of blindness. The normal extension of the real field is 60 degrees superiorly and nasally, 75 degrees inferiorly, and 100 degrees temporally. Now I'll discuss how to read real field printout. There are 8 zones in real field printout. Each There are 8 zones in real field printout. Each zone provides specific information. Zone 1 is patient information and test details. Zone 2 is the foveal threshold and reliability indices. Zone 3 is the grayscale. Zone 4 is the total deviation numerical and probability plot. Zone 5 is the pattern deviation numerical and probability plot. Zone 6 are the global indices. Zone 7 is the glaucoma hemi test, and Zone 8 is the raw data. These zones help in systematically analyzing the real field data. तो आप माउस से दिखाओ ना zones. This is Zone 1. This is Zone 2, foveal threshold and reliability indices. This is Zone 3, which is the grayscale. This is Zone 4, which is the total deviation numerical plot and total deviation probability plot. This is Zone 5, total deviation pattern deviation numerical plot and pattern deviation probability plot. This is Zone 6, which is the global indices, which include the mean deviation, pattern standard deviation, and real field index. Zone 7 is the glaucoma heavy field test, and this is Zone 8, which is raw data. Zone 7 किधर है? This one. Yeah, Zone 7 and 8. Raw data. This is Zone 8. Absolute numerical scale भी कहते हैं इसको. चल, that's fine. I'll discuss each zone one by one in detail. Zone 1 is the patient information. It consists of the patient name and ID to identify the patient, date of birth for comparison of the patient, sensitivity with the normative database of the same age group, date and time for follow-up and detecting progression over time. For precise results, the pupil size should be at least 2.5 to 3 millimeter. If pupil size is less than 2 millimeter, it can cause generalized field depression or peripheral scotomas. The real acuity indicates how well the patient can see, and refractive error correction is very important. And ideally, it should be checked on the same day. An uncorrected refractive error can lead to the generalized field depression. वापस जाए जरा. जो रिफ्रैक्टिव करेक्शन है, इसमें ये बात भी ऐड कर लें कि रेम डिफेक्ट भी आता है. अगर पेशेंट की आप एनएच पे ना विजुअल फील्ड कर रहे हैं तो उसका रेम मैथड है पेरिफेरी पे सप्रेशन आ रही है. और अगर आप रेगुलर ट्रायल बॉक्स वाला लेंस उसके अंदर लगाएंगे जो विजुअल फील्ड के अंदर फ्रेम बना होता है तो वो उससे भी बड़ा रेम डिफेक्ट पैदा करेगा क्योंकि उसका रेम बड़ा होता है. तो देयर आर स्पेशल लेंसेज डिजाइन फॉर दिस. बिग अपर्चर लेंस कहते हैं उसको, वाइड अपर्चर लेंस, जिनमें होल्ड करने के लिए सिर्फ एक रेंज का होता है, बाकी सारा ग्लास होता है. तो ओनली दोज लेंसेज कैन बी यूज्ड while performing perimetry to avoid this rim artifact.
test details consist of the stimulus size ranging from size 1 to size 5. Size 3 is the normal size which we used, and it is equal to 4 millimeter square, and a wide stimulus of constant size, that is 3, is used. The background illumination is set at 31.5 pastel, and it remains constant throughout the test. The test pattern identifies the specific grid pattern, which can be 30-2, 24-2, 10-2. The strategy which can be applied are the full threshold, theta standard, theta fast, and the theta faster. Different types of fixation target are used depending on the patient needs. Central dot is used as a general for general patients, and small diamond for patients with the macular degeneration, large diamond for patients with the central scotoma, and bottom LED is used for in patients with the inferior retinal damage. Zone 2 is the foveal threshold, and the typical range is 30 decibel. It should align with the patient's VL acuity, which means it serves as an internal validation for the VL acuity. If VL acuity is good but foveal threshold is low, it means that there is damage to the fovea or there is improper fixation. If VL acuity is poor but foveal threshold is high, it means that the patient needs refractive correction. Reliability indices consist of the fixation losses, false positive and false negative error. During the test, 5% of the stimuli are presented to the blind spot. A response to such stimulus indicates fixation losses. More than 20% indicates poor reliability. Sometimes the patient responds without a presented stimulus. Such response are called the false positive, and the patient is known as trigger happy. It is susceptible up to 33%. However, sometimes the patient failed to respond to a higher intensity stimulus at locations where the patients previously responded to a lower intensity stimulus. Such response are called the false negative. It is also susceptible up to 33%. Zone 3 is the grayscale. This graph is a color-coded representation of the retinal sensitivity in decibel units given in the numerical raw data. It is not used for final interpretation, but is essential for the patient education to guide about their retinal health. The values near 0 decibels means lower sensitivity are depicted as black points in varying shades, while points closer to the 50 decibels means higher sensitivity are illustrated as white points. इसमें अब ये पॉइंट नोट कर लिए जो पिछली दफा भी हमने पॉइंट आउट किया था. You understand what does 50 decibel mean? क्या होता है 50 डेसिबल स्टिमुलस? ब्राइटेस्ट है कि डार्केस्ट है? डार्केस्ट है. ये एल्गोरिदम उल्टा है. ब्राइटेस्ट स्टिमुलस कितने डेसिबल का है? 0 डेसिबल. 0 decibel is the brightest stimulus and 50 decibel is the darkest stimulus. तो retinal sensitivity उतनी high होगी जितने low intensity stimulus को retina perceive करेगा. तो उसको ये ग्रे स्केल इम्पार्ट करेगा, शेड्स ऑफ ग्रे, और फिर ये वाला प्लॉट करेगा. Zone 4 is a total deviation numerical plot and total deviation probability plot. Total deviation numerical plot indicates depth of the VL field defects. It compares patient retinal sensitivity and decibel values at all points to normative data. 0 means no deviation from the normal. Negative value means decreased retinal sensitivity, and positive value means high retinal sensitivity. Zone 5 is the pattern deviation numerical plot and pattern deviation probability plot. जरा पिछली स्लाइड करना. हाँ, ये टोटल डेविएशन. टोटल डेविएशन प्रोबेबिलिटी प्लॉट वो तो प्लॉट तो हो गया है. होती क्या है टोटल डेविएशन? हाउ इज इट कैलकुलेटेड? एज मैच नॉर्मल से ये एआई का इस्तेमाल सबसे पहले पेरीमेट्री में शुरू हुआ है कि एज मैच नॉर्मल डेटा उस मशीन को फीड किया हुआ है. देखें ये कितनी पुरानी बात है. ये 2000 से पहले का मॉडल है जो अभी तक चल रहा है. उसमें एज मैच नॉर्मल डेटा मौजूद था कि जी
65 ईयर्स का नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग जिस तरह का विजुअल फील्ड देखता है, मशीन को पता है कि उसके जो ये पॉइंट्स हैं 24 या जो में यूज होते हैं या 30-2 में 72 पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे कितनी सेंसिटिविटी है मशीन को पता है कि यहाँ पे जो पेरिफेरी का पॉइंट है, यहाँ एवरेज ह्यूमन रेटिना की सेंसिटिविटी 24 है, ये जो मैकुलर पॉइंट है यहाँ 30 है, 32 है। उससे कंपेयर करती है वो पेशेंट रिस्पॉन्स को, और उससे जितनी डेविएशन होती है हर पॉइंट पे, उसको वो टोटल डेविएशन मैप में प्लॉट करती है। तो एज मैच नॉर्मल से वो कंपेयर करके आपको टोटल डेविएशन मैप देती है। तो ये भी साथ पता होना चाहिए कि ये है क्या। देखा ये वापस कर ये पॉइंट समझने बड़े जरूरी हैं। कंपेयर्स पेशेंट्स डेसिबल वैल्यूज एट ऑल रेटिनल पॉइंट्स टू नॉर्मेटिव डेटा। नॉर्मेटिव डेटा क्या है? एज मैच नॉर्मल पॉपुलेशन में जो डेटा मशीन के पास मौजूद है उसके साथ कंपेयर करके देखती है कि ये पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहा। तो ये एआई का अगली यूज है मेडिकल फील्ड में, ऑप्थेल्मोलॉजी में। और नेगेटिव पॉजिटिव की अहमियत भी पता चल गई। वापस जाओ, अगर ये टोटल डेविएशन नेगेटिव होगी तो व्हाट डज दैट शो? डिक्रीज द सेंसिटिविटी। पॉजिटिव होगी तो मतलब एवरेज से ऊपर, अबव एवरेज है, और नेगेटिव मीन बिलो एवरेज है। ये चीजें बिल्कुल आपको ना क्लियर होनी चाहिए। और अब ये दूसरा आपका जो पॉइंट शुरू में ही आपने देख लिया था, ये जो स्केल है इसको न्यूमेरिक कहेंगे, जहां भी फिगर्स लिखी हुई हैं। और जहां इस स्केल को ग्राफिकली ग्रे स्केल में, ग्रे शेड्स में प्रेजेंट किया जाएगा, वहां पे इसको ग्रे स्केल कहेंगे। तो इन्हीं वैल्यूज को वो ग्रे स्केल में भी टोटल डेविएशन भी दो तरह नजर आएगी, न्यूमेरिक वैल्यूज भी और ग्रे स्केल में। जी। Total deviation probability plot shows extent or pattern of the real field effects. It is a color-coded representation of the statistical analysis of the total deviation numerical plot, which means each deviation value of the total deviation numerical plot is given a symbol based on its p-value and is represented symbolically. Lighter to the darker shades represent p-values from less than 5% to p-values from less than 0.5%. p-value क्या है? Sir, this is the probability value. Sir, less than 5% indicates that it is present in less than 5% of the population, and it is less significant, and less than 0.5% means it is present in less than 0.5% of the normal population, which is more significant. Excellent answer. तो ये जितनी पी वैल्यू कम होगी उतना ये सिग्निफिकेंट होगा, उसको वो डार्क शेड का आंसर करेगा। वापस जाना। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ये देखें, मेरा माउस नहीं मुड़ रहा है। ये जो लेस देन 5% मीन के ये 5% ऑफ द पॉपुलेशन के आसपास है, तो उसको वो लाइट शेड में 4 डॉट्स हैं, ये 4 डॉट्स में जितने पॉइंट्स हैं ये लेस देन 5%, क्या Less than 5% of the normal population हो सकते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप सी बनी हुई है ये लेस देन 2% में है, और ये ब्लूटूथ काटी है शायद, तो ये 1% में है। और बिल्कुल डार्क स्क्वायर जो है, तो इनको हम गिनते होते हैं कई दफा। यहाँ पे अभी आप पैटर्न में जाएंगे तो वहां तस्करा आएगा। यहाँ आप देखें कि ये काले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं
ये एज के पास होंगे तो कम अहम है, और नॉन एज होंगे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इसको टोटल डेविएशन मैप को देखें तो इसमें 0.5% पी वैल्यू के नॉन एज पॉइंट्स हैं। Zone 5 is the pattern deviation numerical plot and pattern deviation probability plot. The pattern deviation numerical plot is a modified version of the total deviation numerical plot to bring out deep scotomas and localized field defects. इसमें फिर लिखेंगे कि हाउ इज इट कैलकुलेटेड। Sir, I explain. आप करो। To convert total deviation numerical plot into pattern deviation numerical plot, we arrange the points in the total deviation numerical plot in chronological order, and the seventh best point on this data is noted. For example, we arrange the points and the seventh best point comes out to be +5. Then we will convert these to 0. So the -5 and +5 is equal to 0, and we add the +5 to all the values on the total deviation numerical plot. This corrects the generalized depression in retinal sensitivity and indicate the any underlying localized scotoma depression in the field. इसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का तस्करा नहीं होता। सर वो आएगा अगेन ग्लोबल इंडिसेस आएगी। तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को किस में से माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? सर उसको करेक्टेड पैटर्न स्टैंडर्ड डिवीएशन में से माइनस करेंगे। पैटर्न डेविएशन में से माइनस करेंगे तो करेक्टेड पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी। तो पैटर्न डेविएशन जनरलाइज्ड डिप्रेशन को माइनस करेंगे टोटल डेविएशन में से, तो पैटर्न डेविएशन मैप आएगा। तो करेक्टेड पैटर्न डेविएशन मैप आएगा जब पैटर्न डेविएशन में से शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को माइनस करेंगे, वो आगे बताते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैप डिसीजन मेकिंग में करेक्टेड पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन का मैप। मैं भी कोई गलत बात करूं तो बता दें। The pattern deviation probability plot. This graph is a color-coded representation of the numerical values of the pattern deviation numerical plot. It brings out localized field defects and scotomas which may be masked by the generalized depression. It helps in identifying the patterns of the field loss. Zone 6 are the global indices which consist of the mean deviation, which represent the average of all the values of the total deviation numerical plot. It shows change in height of the hill of the vision. It usually has a negative value. Low value means localized field defects, while higher values indicate advanced glaucoma or the generalized field defects. The normal value of mean deviation is greater than -2. -2 की फिगर मीन डेविएशन MD के लिए याद रखनी। Pattern standard deviation indicates the degree of variability among points in the total deviation numerical plot. It is the deviation in the shape of the hill of the vision. It always has a positive sign. A low value means normal shape. Higher value indicates an irregular hill of vision. It is useful for diagnosing early glaucoma. And the normal value of pattern standard deviation is 0, and more plus is bad in pattern standard deviation, and more minus is bad in mean deviation. Weird field index is derived from the pattern deviation numerical plot. It indicates amount of the ganglion cell loss and percentage of retinal sensitivity of the patient compared to the normal. A decrease in this index on follow-up scans indicate the progression of the field defects. P-value is the probability of the index value in a normal population. A p-value of less than 0.5% indicates it is present in less than 0.5% of the population, which is more statistically significant. तो क्वेश्चन हो ना वहीं रोक ले, तो आपके माथे पे कोई सवालिया मार्क बन रहा। नेक्स्ट दोबारा पढ़ेंगे ना अच्छी तरह दोबारा, तो कंफ्यूजिंग चीज है। Short-term fluctuation and corrected pattern standard deviation are the indices used in the full threshold strategy. And in short-term fluctuation, we select the 10 retinal points and check for the threshold twice. And the any variability in these values shows short-term fluctuation, and the normal fluctuation is less than 3 decibel. For the corrected pattern standard deviation, we subtract the short-term fluctuation from the pattern standard deviation.
Zone 7 is the glaucoma hemifield test. In this, we compare the 5 areas on either side of the horizontal meridian, and the result is displayed as within normal limits. Borderline is the case when there is asymmetry in 97% of the patients without glaucoma, and outside normal limits when the asymmetry is found in 99% of the patients without glaucoma. Zone 8 is the raw data. In this, we have retinal sensitivity and decibel values of each point tested, and the values near 0 decibel are shown as black, indicating absolute scotoma, which means there is no response to a maximum stimulus of 10,000 apostle, while the values closer to 40 decibels are shown as white scotomas, which means it responded to even a lightest stimulus of 1 apostle. Now I'll discuss how to classify glaucoma defects as mild, moderate, and severe based on the BL field. If the mean deviation is less than -6, it is mild. If it is between -6 to -12, it is moderate. But if it is less than greater than -12, it is severe. Second, we note the points. We note the p-value in pattern deviation probability plot. If there is 25% of the points having p-value less than 5% and 10% of the points having p-value less than 1%, it is mild. If p-value is less than 5% of 25 to 50% of the points and less than 1% of 10 to 20% of the points, it is moderate. If p-value is less than 5% of greater than 50% of the points and p-value is less than 1% of greater than 20% of the points, it is where glaucomatous defects. The third one is we note the retinal sensitivity in central 5-degree fixation. If there is even a point of retinal sensitivity less than 15 decibel, if there is no point, then it is mild. If there is even a 1 point of less than 15 decibel in either upper or lower fields, it is moderate. And if it is a 1 point of 0 decibel sensitivity or less than 15 decibel sensitivity point in both upper and lower fields, it is severe glaucomatous defect. जितना सेंटर के करीब होंगे, पेरिफेरी से दूर होंगे, उतना ही डार्क पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा. तो ये टेबल जो है इसको समझना और ध्यान में बिठाना, ये समझे इस प्रेजेंटेशन का निचोड़ है. आगे. Another criteria to classify early field defects is the Anderson and the Patella criteria, also called the Hodder-Parrish-Anderson criteria. In this, we have 3 main points. First is the normal glaucoma hemifield test. Second is if there are 3 or more contagious non-edge points in the pattern NPs कहते हैं, non-edge points, of which at least 2% having p-value less than 5% and 1 point having p-value less than 1%. And third is corrected pattern standard deviation should be abnormal with a p-value of less than 5%. ये देखें इसको जरा, वही पॉइंट आ गया ना कि इवन जो लेस देन 5% वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट और 0.5% वाले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट. कि ये 2 और 3 ये, तो फिर भी वही बात है कि 3 ये इकट्ठे हों और ये नॉन एज है, ये एज है, ये कम इम्पोर्टेंट, ये नॉन एज ज्यादा इम्पोर्टेंट. सर एज तो नॉन एज, ये जो एज के करीब है वो एज इस मैप में, ये एज पॉइंट है, ये एज पॉइंट है. ये जो सेंटर में है जो पेरिफेरी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ये नॉन एज है, ये नॉन एज है, ये नॉन कोई भी पॉइंट हो, चाहे ब्लैक वाला हो या दूसरा वाला हो. दूसरा वही तो अभी बोलना दोबारा. ठीक है. Of which at least 2% of the points having p-value less than 5% and 1 point having p-value less than 1%. एक ये वाला और 2 ये वाले सिग्निफिकेंट, इवन वो डार्क भी ना हो, तो ये वाले तो एक से ज्यादा, एक भी हो तो सिग्निफिकेंट. And these 3 criteria should be met in at least 2 successive real fields. For the CETA strategy, we have modified Anderson criteria in which the corrected pattern standard deviation is replaced with the pattern standard deviation. Now I'll discuss types of field defects in glaucoma. Nasal step is present nasally and it respects the horizontal meridian. Paracentral scotoma is a cluster of low sensitivity points 10 to 20 degrees from the blind spot. When the paracentral scotoma reaches the blind spot, it forms the cetus scotoma. When the cetus scotoma extends in an arcuate shape to reach the horizontal meridian on the opposite side, it forms the arcuate defect. When 2 arcuate defects are present in superior and inferior hemispheres, it forms a ring scotoma.
Now there are some real field effects in other diseases. In papilledema, in early stages of this swelling, there is enlargement of the blind spot. While in later stages, when the optic atrophy has started, the real field started to constrict. In optic neuritis, the field effects seen can be the central scotoma, centrosiccal scotoma, and altitudinal field effects, arcuate or the double arcuate defects, and hemi defects. In optic exclusion, the field defects can vary from the infero-nasal defects to arcuate defects, nasal steps, enlargement of the blind spot, and constriction of the real fields. मैं फिर आपको कहता हूँ ना, हमने विजुअल फील्ड को ट्रीट नहीं करना, ट्रीट हमने पेशेंट को करना, each and every bit of information from history, examination, and investigation will help you to reach a correct decision. Simple visual field पकड़ के देखेंगे तो nasal step तो ब्लूजन में भी आ रहा है, इसलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ओसीडी फाइंडिंग्स, विजुअल फील्ड सारा कुछ आपके हाथ में हो तो फिर डिसीजन करें। ग्लाकोमा का डिसीजन ऐसा नहीं है कि एहतियातन बीटा गान शुरू करें, इट्स अ लाइफ टाइम डिसीजन। In branch retinal vein occlusion, the field loss is segmental, which corresponds to the area drained by the occluded vein. In central retinal vein occlusion, in ischemic CRVO, both central and peripheral scotomas are more common than in non-ischemic. The common peripheral field defect seen with ischemic is an infero-nasal defect. In branch retinal artery occlusion, the defect varies with the duration of onset of the disease. Patient presenting within 1 week of onset may have central scotoma or central altitudinal defects. While in peripheral field defects, we most commonly seen is the inferior nasal and the superior nasal defects. Branch है ना, inferior branch occlude होगी तो defects superior आएगा, superior occlude होगी तो inferior आएगा. In retinitis pigmentosa, the characteristic field loss is the gradual and progressive peripheral. Superior real field is often involved first due to the early involvement of the inferior retina. Central real field is affected in patients with the cerebral macular edema, epiretinal membrane, or RP changes at the macula.